अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ लाइबा नूर और हमने मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है। मैं ग्रुप मेंबर्स आर सुमला खान और महानूर। सबसे पहले मैं डेटा सेट्स की बात करती हूँ। तो डेटा सेट्स हमने मूवीज़ का एक डेटा सेट उठाया, एक क्रेडिट्स उठाया जो कि हमने गैगल से उठाया। और इसके अलावा जो बेस्ड ऑन द टाइटल मूवीज़ के अंदर मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट्स के अंदर कास्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइटल बोथ टेबल्स के अंदर हमारे पास टाइटल्स हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो हमने बेस्ड ऑन द टाइटल हमने उन दोनों के ऊपर जॉइंट अप्लाई किया है और जॉइंट अप्लाई करने के बाद इन दोनों टेबल्स को मर्ज किया है। और इसके अलावा ये जो डेटा क्लीन नहीं दिख रहा है तो हमने इसके ऊपर डेटा क्लीन किया है। देन हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फैच करके उसके ऊपर वर्किंग की है। तो इसका मैं आउटपुट दिखा देती हूँ आपको। आउटपुट किस तरह से आ रहा है। ये जो हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि हमें इंफॉर्मेशन फैच करके ला के दे रहा होगा। तो रिकमेंड के नाम से हमने फंक्शन बनाया है और ये हमारा टेबल है जो कि हमने मैक्स कॉलम का एक फंक्शन लगाया। तो हमें सारे रोज हमें दिख रही हैं। तो इसके अंदर लेट्स सपोज मैं स्पाइडर 3 का डेटा से रिकमेंडेड मूवीज चेक करना चाह रही हूँ। तो मैंने इसको फंक्शन में डाला लाइक दिस। ठीक है, या फिर कोई और मूवी उठा लेते हैं। आयरन मैन 3 की उठा लेते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड डाल रही हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिकमेंड करूँगी तो मुझे आयरन मैन 3 से ही रिलेटेड जो भी मूवीज़ हैं वो दिख जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ वर्क कर रहा है। बाकी इसके अलावा हमने इसके ऊपर कोसाइन सिमिलरिटी की हमने इंपोर्ट की है एस्केलेंट से। जो कि दोनों जो वेक्टर्स हैं हमारे फ्रॉम वन एंड अदर। तो वो हमें सिमिलर चीज़ों की बेसिस के ऊपर ये हमें इंफॉर्मेशन सजेस्ट कर रहा है। तो सिमिलरिटी का ही फंक्शन फिर हमने यहाँ पे लगाया फंक्शन। तो फिर हमें वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर लूप के थ्रू हमें फैच करके ला के दे रहा है। बाकी इसके अलावा जो थ्रू आउट द कोडिंग है जो हमने इसको क्लीन किया है डेटा और दोनों को हमने ज्वाइन किया है। तो ये वाली चीज़ है सुमला और महानूर कोड को थ्रू आउट एक्सप्लेन कर रही होंगी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अस्सलाम सर। सो बेसिकली मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम हमने बनाया है पांडास की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके। इसमें सबसे पहले दो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, नमपाई और पांडास को। नमपाई जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटा सेट के ऊपर इसलिए इंपोर्ट किया, और पांडास की लाइब्रेरी से हम डेटा फ्रेम्स को यूज करेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर एक्शन परफॉर्म होगा वो डेटा कलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग होगा। इसका सब एक्शन है डेटा सोर्सिंग। तो हमारे पास दो यहाँ पे CSV की फाइल है, एक क्रेडिट्स के नाम से और एक मूवीज के नाम से। क्रेडिट्स के अंदर तमाम मूवीज के कास्ट और क्रू का डेटा जो है वो मौजूद है, जबकि मूवीज के अंदर मूवी से रिलेटेड सारा डेटा जो है वो मौजूद होगा। तो इसको व्यू करने के लिए अगर हम क्रेडिट्स अंडरस्कोर डेटा फ्रेम को अगर व्यू करें तो हमारे पास इस तरीके से कुछ जो है वो व्यू आएगा, जिसमें मूवी की आईडी, टाइटल, कास्ट और क्रू और दीगर और भी जो है इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस तरीके से मूवी के डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स जो है वो मौजूद हैं इस तरफ। तो इसके अंदर भी मूवी से रिलेटेड तमाम डेटा है, प्रोडक्शन की कंट्री कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है, मूवी की टाइटल क्या है एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑप्शन। इसके अंदर बेसिकली ये कर रहे हैं कि पांडास हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स को रोज को जो है वो दिखाता है रन करते वक्त। तो अगर हमें सारी रोज विजिबल करनी है तो हम सेट ऑप्शन का इसके अंदर फंक्शन को यूज करेंगे और उसको यूज करके मैक्स कॉलम और मैक्स रोज को जो है वो दिखाएंगे। तो अब क्रेडिट्स के जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर तमाम हमारे पास अवेलेबल जो भी रोज हैं वो विजिबल हो जाएंगी। इसी तरीके से हमने मूवीज के डेटा सेट के अंदर भी किया हुआ है, डेटा फ्रेम के अंदर भी। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिट्स का टॉप जो है वो 5 रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे व्यू करेंगे, ये देखने के लिए कि डेटा सही इसके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से टेल के फंक्शन को यूज करते हुए लास्ट के 5 को विजिबल करेंगे और नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे इसके अंदर डेटा मर्जिंग। तो बेसिकली मूवी और क्रेडिट्स दोनों CSV फाइल्स के अंदर एक चीज हमारे पास कॉमन है, टाइटल। तो हम टाइटल की बेसिस के ऊपर इन दोनों डेटा फ्रेम्स को जो है वो एक दूसरे में मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद वापस से इसको मूवीज अंडरस्कोर डेटा फ्रेम वेरिएबल में सेव करवा देंगे। तो मूवीज डेटा फ्रेम डॉट मर्ज करके हम क्रेडिट्स इसको मर्ज कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, क्योंकि टाइटल दोनों में कॉमन है। और इसको मर्ज करवाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि सक्सेसफुली मर्ज हो गया। तो शेप के थ्रू हम विजिबल इसको जब करेंगे तो हमें नजर आएगा कि अब जो इसकी नंबर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं 20 से। दोनों में 20 मौजूद है, अब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स 23 हो गए हैं। और इसका हेड का फंक्शन लगा के हम टॉप इसके अंदर व्यू करें तो हमारे पास यहाँ पे नजर आएगा कि तमाम कॉलम्स दोनों डेटा फ्रेम्स के मर्ज हो चुके हैं। इसी तरीके से इन्फो का यूज करते हुए, इन्फो का फंक्शन यूज करते हुए हम इसके अंदर तमाम कॉलम्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि क्रेडिट्स और मूवीज दोनों के कॉलम्स इस एक डेटा फ्रेम के अंदर विजिबल है। नेक्स्ट हम इसके अंदर से सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉलम्स को उठा के
सेव करवाएँगे वापस डेटाबेस के वेरिएबल के अंदर और अनइम्पोर्टेंट को हटा देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स हैं हमारे पास, वो मूवी की आईडी है, टाइटल, ओवरव्यू, जॉनरा वगैरह है, इसको हम सेलेक्ट करके वापस से मूवी की डेटा फ्रेम मूवीज़ अंडरस्कोर डेटा फ्रेम के वेरिएबल के अंदर सेव करवा देंगे। नेक्स्ट हम इसका हेड का फंक्शन यूज़ करके इसकी टॉप 5 जो है वो विज़िबल करेंगे रोज़, तो उससे हमें नज़र आ जाएगा कि जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे नाम कॉलम्स के, वो कॉलम्स विज़िबल हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से मूवीज़ डेटा फ्रेम की इन्फो को इसमें विज़िबल करेंगे ने और इसके बाद हम डेटा क्लीनिंग पे आ जाते हैं। डेटा क्लीनिंग के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से हर कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यूज़ तो रोज़ में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमें नज़र आ जाए ओवरव्यू के कॉलम में 3 नल जो है वो रोज़ मौजूद हैं, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद डुप्लिकेटेड वैल्यूज़ को देखेंगे, डुप्लिकेटेड वैल्यूज़ हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हम जो है आगे नेक्स्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग पे आ जाएँगे। So now I have to convert my data into abstract syntax screen model. So this function is used to convert a string representation into a free version. So first, and also here we will be removing extra things in brackets. So as you can see here above, the data was something like this, with containing brackets, commas, and column and unnecessary spaces. So we have to remove all these. And here we are removing these using these functions and this one. And now if you can see here in the overview, sorry, in the genders and keywords, all the extra columns and brackets are removed here. And then you'll be applying the same function for cost here, the similar function used here, and then convert it. And now the data set looks like this. As you can see, the cost column also shows the structured data now. And here, if we compare it with view, that still contains unnecessary columns, brackets. So now we'll be working on two field, the similar one here, and then here. And now all our fields from overview, generate, keyword, cost, and view doesn't contain any necessary columns and bracketing. Now what we have to do next is, so here we're checking how the information is looking into overview column. This one, because it shows dot dot, and here you can see the whole data. And after that, what you have to do is, as you can see, this is the one string, but you have to separate it like a different word. So here I will be separating the words, for example, in the column, da, in column, using this. So here we split the words using the column, and then we did the same for generate, keyword, cost, and field as well. So all the fields, the words are separated by columns, here, and then here, and here as well. Sorry, actually this is removing the spaces, also the column as well, but as you can see in the previous one here, it was showing one word but with a space. So using these functions, I replace the space here, this space with this one, and now it looks like this. Science fiction, super colony, different spaces, and all kingdom. And now we will be applying feature engineering. So for the feature engineering, we are merging four fields, overview, gender, keyword, class, and view to one column, which is tag, this one. So here I merged all the information from these 5 fields into tag, and we will be using this column from now on to apply further operations. So here you can see how it looks like. The new column has been added and it contains all the information from these 5 columns. So because this 5, so because we have already merged all the information into this column, now we don't need these 5. So here we will be creating a new table again that is select only these 3 columns like this, and now you can see our table looks like this. Movie ID, title, and that contain all the information from those 5 columns, and now as you can see it contains extra square brackets that we have to remove. So here I'm removing this bracket from the back column, and after removing the tags, after removing the square brackets, it looks like this. And here I can see the whole data looks like this in tag column. And if you notice here, it contains some upper and lower cases. But for the better processing, we recommend to use lower case. So here I will be converting this column into a lowercase. And once it's converted, it looks like this here. And you can also see it here. All the letters are in lowercase now. Now we are doing text capitalization. So the recommendation can be calculated. And how we will be doing this count capitalization, we will be importing SQL feature expecting text and importing count capitalizer that will be transforming to our data into the vector based on the frequency count, like how many times words occur in our data set. So here, first I will be checking that there are no null values in text fields, and after that I will be checking here like words in each field that occurs. So it shows this number, the report number, and here I will be converting vector to array using this function.
And after converting the vector to error, it looks like this into error sum. Now we will be importing another feature, which is natural language toolkit. We will be using this for the vector classification using the human language. And here I will be using vortex scanner from NLTK. So here we have created this function for the scanning, and here we are applying the scanning to the fact column. And lastly, we are checking the cosine similarity that will help to recommend the movie based on the movie that we have given in our function later. So for example, here I'm importing the library for cosine similarity. Here I'm checking the rank vectors for all the arrays. So just for my own use, I changed the name from cosine similarity to similarity. And here you can check the similarity for the index 0. It shows the array like this. Lastly, we have sorted the similarity list for the columns 1 to 6, and here it shows like this. And then we have created a function that we'll be using